So, okay, student, today we will discuss about the chapter 6, class 6, chapter 4, question and answer, timeline and sources of history. ये चैप्टर का नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्लास 6 क्वेश्चन और इसके आंसर. द बिग क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन 1 है, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम. हिस्टोरिकल टाइम को हम किस प्रकार से मेजर करते हैं. टू मेजर हिस्टोरिकल टाइम we use several tools and methods that help us understand and organize event from the past. Some of them are as follow. ये कुछ इस प्रकार से हैं हिस्टोरिकल टाइम के बारे में. पहला है ग्रेगरियन कैलेंडर बीइंग द मोस्ट कॉमनली यूज टुडे. आज ज़्यादातर ग्रेगरियन कैलेंडर को काम लेते हैं. इट काउंट्स ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, now labeled as CE means common era, and year before his birth as BCE before common era. Other cultures have their own calendars like the Islamic or Chinese calendar. We also use timeline which usually arrange events in the order they happened, helping us see the sequence and relationship between events. हिस्टोरिकल टाइम कैन बी डिवाइडेड इंटू डिकेड्स. 10 सालों में हिस्टोरिकल टाइम को सेंचुरीज, 100 ईयर्स एंड मिलेनिया, 1000 ईयर्स. वी ऑफन रिफर द BCE बिफोर कॉमन एरा एंड CE कॉमन एरा टू लेबल डिफरेंट पीरियड्स. एडिशनली artifacts and fossil are dates using scientific method like carbon dating, while written record, oral tradition and archaeological discoveries provide valuable information about the past. Question 2. How can various sources help us understand history? हाउ कैन वेरियस सोर्स, जो बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के रिसोर्स हैं, सोर्स हैं, वो हमें हिस्ट्री को समझने में कैसे हेल्प करते हैं. आंसर इसका, वेरियस सोर्सेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्स perspectives, detailed evidence and contextual insights. Here how different type of sources contribute to our understanding of history. प्राइमरी सोर्स हैं, इनमें जो प्राथमिक स्रोत हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और द फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम अंडर स्टडी. उदाहरण के लिए इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख, एंशियंट लिटरेचर, लेटर, डायरी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, आर्टिफैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर. ये प्राइमरी रिसोर्सेज हैं, सोर्स हैं. सेकेंडरी सोर्स है वर्क्स दैट इंटरप्रेट, एनालिसिस एंड समरीज. प्राइमरी सोर्सेज फॉर एग्जांपल बुक, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड रिव्यू. ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं. फिर ओरल हिस्ट्रीज हैं, रिकॉर्ड इंटरव्यूज़ and spoken account from individual who experience or witness historical events. For example, interview recordings और inscriptions हैं, transcriptions. ये फिर क्वेश्चन 3, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन्स लिव, कि जो पहले के व्यक्ति थे कैसे रहते थे, क्या क्या काम करते थे और किस प्रकार से, कौन सी युग में. अर्ली ह्यूमन्स लिव बाई हिस्ट्री, टाइमलाइन, पोस्टर्स, हिस्टोरिकल फिक्शन बुक्स. ओके, सबसे पहले है हंटिंग एंड गैदरिंग. सबसे पहले अर्ली ह्यूमन हॉन्टेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट, नट, प्लांट्स फॉर फूड. ये कौन था, हंटिंग और गैदरिंग वाला. दूसरा नोमैडिक लाइफस्टाइल, दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. घूमते रहते इधर उधर यहाँ वहाँ भोजन की तलाश में. एंड वाटर, एंड नॉट स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग. ज़्यादा समय एक जगह नहीं बिताते थे वो. सिंपल टूल्स होते थे उनके. अर्ली ह्यूमन यूज सिंपल टूल मेड बाई स्टोन, bone, wood to hunt and gather food. फिर shelters, they lived in natural shelters like caves and made temporary huts from branches and leaves. फिर fire, आग मुख्य भूमिका थी. Early humans discovered how to make fire, which they used for cooking food, warmth and protection from wild animals. Clothing, कपड़े, they made clothing from animal skin to protect themselves from the weather. कम्युनिकेशन उनका कैसे होता था. अर्ली ह्यूमन्स डेवलप्ड सिंपल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग साउंड, जेस्चर्स एंड लेटर
ड्राइंग ऑन केव वॉल्स। सोशल ग्रुप कौन से होते थे? दे लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप और ट्राइब्स वर्किंग टुगेदर टू हंट, गैदर फूड एंड प्रोटेक्ट ईच अदर। आर्ट एंड कल्चर क्या था वहाँ का? अर्ली ह्यूमन्स क्रिएटेड केव पेंटिंग करते थे एंड कार्विंग, शोइंग द बिलोंगिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर एक्सप्रेशंस। लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन 1 इन द पिक्चर। लुक एट सम एक्टिविटीज ऑफ अर्ली ह्यूमन इन ए रॉक शेल्टर। पृथ्वी के ऊपर ये रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। विच वंस कैन यू रिकॉग्नाइज? गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच। आंसर, हियर आर सम एक्टिविटीज़ ऑफ अर्ली ह्यूमन इन रॉक शेल्टर एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार कर रहे हैं और उसको इकट्ठा कर रहे हैं, भोजन को अपने को। Early humans in rock shelter engage in hunting animals and gathering wild plants for food. Evidence of these activities include remains of animal bones, tools made from stone and bone, and plant remnants. Tool making, कैसे बनाते थे टूल? तो stone tools such as hand axe, scrapers, and arrowheads were crafted by early human in rock shelter. These tools were essential for hunting, processing food, and other daily tasks. The presence of flask and course indicates the tool making process. Fire making and usage. Fire played a crucial role in the lives of early human. It was used for cooking food, providing warmth and protection against predators. Charcoal deposit, ashes layers, and hearth found in rock shelter are evidence of the fire usage. Art and symbolism. Rock shelters often feature prehistoric art, including painting and carving on the walls. These artwork depict animals, human figures, and abstract symbols, reflecting early human culture, beliefs, and communication method. Shelter and living species. Rock shelters served as living species, providing protection from harsh weather and predators. Evidence of structured living area such as sleeping spot, storage area, and communal spaces indicates how early humans organized in their living quarters. सोशल एंड रिचुअल एक्टिविटीज़, उनके सामाजिक और जो एक्टिविटीज़ थे, रिचुअल, धार्मिक। एविडेंस सजेस्ट दैट रॉक शेल्टर वर ऑल्सो यूज फॉर सोशल एंड रिचुअल एक्टिविटीज़. दिस इंक्लूड्स द प्रेजेंस ऑफ burial sites, ritualistic objects, and communal space where group of early human might have gathered for ceremonies or social interactions. फूड प्रिपरेशन अर्ली ह्यूमन है, वो प्रिपेयर्ड फूड इन रॉक शेल्टर एज इंडिकेटेड बाय ग्राइंडिंग स्टोन्स, हेर्थ, चूल्हे, एंड रिमेन्स ऑफ प्रोसेस्ड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल. दीज एक्टिविटीज इंक्लूडेड कुकिंग, butchering animals, and processing plants for consumption. क्वेश्चन 2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीन. इस सीन को आप देख सकते हैं. इसमें it depict an agriculture community from a few millenniums ago. List the main activities you can identify. इसका आंसर हम कह सकते हैं, the following activities can be observed from the given image. पहला है harvesting. The people are working in fields for harvesting the crop. Yes, you can see many of the men are engaged in their harvesting activity. Sheep rearing. The people used to domesticate the sheep and goats for wool and meat. फिर gathering, people used to gather fruit and vegetable for food. Some people are cooking food, and some can be seen to carry the wood or the crop. Small settlement. Early human used to live in small groups. Initially, they started to live in small settlements.
क्वेश्चन 1 एज ए प्रोजेक्ट के तौर पे है, राइट द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली और विलेज इफ़ यू लिव इन वन यूजिंग सोर्स ऑफ हिस्ट्री एट योर डिस्पोजल, आस्क योर टीचर टू गाइड यू। क्वेश्चन 2 कैन बी कंपेयर हिस्ट्रियन टू डिटेक्टिव, give reason for your answer. Yes, we can compare historian or detective. Just like detectives, historian also look for clues to solve mysteries. Detectives use evidence to figure out what happens in a crime, whereas historian uses sources like old books, artifacts and inscriptions to understand what happened in the past. Both detective and historian ask questions, investigate and piece together information to find the truth and the hidden truth also. Question 3, a few exercise with dates. Place these dates chronologically on the timeline. 323 CE, 323 BCE, 100 CE, 100 BCE, 1900 BCE, 1090 CE, 2024 CE. Question B, if King Chandragupta was born in 320 CE, which century did he belong to? And how many years was that after the Buddha's birth? इसमें बी का आंसर है वो दे रखा है, इफ किंग चंद्रगुप्ता वॉज बोर्न इन 320 CE, which century did he belong to and how many years was that after the Buddha's birth? King, तो किंग चंद्रगुप्ता वॉज बोर्न इन द 14th century CE. Given King Chandragupta was born in 320 CE, Buddha was born in 560 BCE, hence 560 plus 320 minus 1 is equal to 880 minus 1 is equal to 879 years. That means King Chandragupta was born in 879 years after the Buddha's birth. Rani of Jhansi was born in 1828. Which century did he belong to and how many years was that before India's independence? Rani of Jhansi was born in the 19th century CE. India gained independence in 1947, hence 1947 minus 1828 is equal to 119 years. That means Rani of Jhansi was born 190 years before the India's independence. Turn 12,000 years ago into a date. Answer इसका, assuming the current year is 2024 CE. 12,000 years ago would be 12,000 years minus 2024 plus 1 is equal to 9,977 BCE. Plan a visit to a nearby museum. The visit should be prepared with some prior research on the kind of exhibits the museum holds. Keep notes during the visit. Write a brief report afterwards, highlighting what was unexpected, interesting, fun about the visit and the exhibits. Answer. These questions need to be written by the student themselves because this is their own reports. But here we have provided some sample answers. Museum report preparation कैसे करेंगे? Before visiting the National Museum, I got in touch with them through their online website and found that it houses artifacts from ancient time. The exhibit featured artifacts such as terracotta figures, pottery, seals, and jewelry from the various areas of Indian history. During the visit, I was keeping and maintaining the notes on the different sections, especially focusing on the Harappan gallery, the Mauryan and Gupta era artifacts. The art section related to Buddhist era, medieval Indian art, and sculpture and textile and decorative arts. Reports क्या कर सकते हैं? After the visiting of this site, the visit
to the National Museum was very enriching. How? The most interesting was the Harappan poetry, which displayed commendable craftsmanship. The exhibit features artifacts such as terracotta, pottery, seals, and jewelry from the Harappan civilization. Contemporary art was another attraction, and it housed modern and contemporary artwork by prominent Indian artists, which provided a context to the historical collection. These works highlights the dynamic and involved nature of Indian art in the contemporary era. Historical fictions book. Okay, thank you for listening me.